Namaste, ma'am G. Yes, this is my girl Priyanka with me today. Hello and welcome to yet another edition of Spoken English Personality Development, Communication Skills Development on this live streaming of SKD University. With you, I am your host Parmita. I'm your trainer, your facilitator, everything, right? And and let me just wait for a little while to find out how many of you have already joined. I can see Priyanka, I can see Aliza, I can see Anita. Hi to all of you. Santosh Bansal, good evening, my dear. Okay, so today I have hello, ma'am ji. How are you? I'm fantastic. I'm fantastic. How are you, Priyanka Chaudhary? Okay. Okay, Anita. Anita is also asking me the same question. How am I? I'm great. I'm great. Thank you so much for being so uh, courteous towards me. So, my dear students, okay, okay. So, my dear students, do you have any idea like what we are going to do today? You can see it written on the top of your screen. Today, I'm going to give you an introduction of personality development. Rekha Singla. Hello, Rekha. Welcome to the program. I'm great, Rekha. Thank you so much. And I believe you are also doing fantastic. So, today we are going to talk about something which is very, very important and which is a part of this program also, which SKT University is running free of cost for all the students across anywhere, any geographical location. That is personality development. We will discuss a little bit about personality development, and from the next week onwards, I will take one feature of personality development and I will discuss like I do in the class. So Rekha Singla, Inder Singh Bharti, hello Inder Singh, hello Gagandeep. जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर जाओ ताकि आज जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. क्या है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये पर्सनालिटी भी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक में आज हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक से इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पे मेरी पर्सनालिटी एकदम सही है, कहाँ शायद अगर कोई चेंजेस मुझे लाना हो अपने पर्सनालिटी में, मैं उसको कैसे लाऊं. लेकिन एक बात मैं बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई फॉर्मूला है. हर आदमी, हर इंसान अपने हिसाब से अपना पर्सनालिटी होता है उसका, राइट. मेरी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से अलग है, आपका किसी और से. इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ और आप गलत है. पर्सनालिटी डिपेंड करती है सिचुएशन पे, पर्सनालिटी डिपेंड करती है उम्र के ऊपर, पर्सनालिटी डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन आवर एजुकेशन, एवरीथिंग. So it is not that that there is something called good personality or bad personality. Rather, I would say that there is something called the right personality or not so right personality, right? Because it is a perspective. ये देखने की एक एक तरीका है कौन किसे कैसे देखे. तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिंदी क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्यक्तित्व विकास. आई डू नॉट नो, मैंने जस्ट लिटरल ट्रांसलेट कर दिया है. कोई मुझे बता सकता है? आप सोच के मुझे बताइएगा, तब तक मैं थोड़ा शुरू करती हूँ. ओके, नाउ कैन यू थिंक ऑफ समवन. आपने एक दिन मुझे बताया था कि किसी के पापा, किसी के मम्मी, किसी के टीचर whose talking style you admire, you like,
एक दिन इस विषय पे हम लोगों का बात हुआ था, याद है आपको? मुझे याद है। आज मैं उसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके पूछती हूँ। हेलो रुचिका पुनिया। मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके पूछती हूँ। वो क्या है कि कोई एक इंसान जिसको देख के आपको अच्छा लगे, even before you start talking to him or her. Maybe you do not get the chance to talk to him or her. But when you see, you feel good. Maybe on screen, टीवी पे देखते हैं, मूवी हॉल में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, जिनको देख के you are a fan of that person. Are there anyone like that in your personal life, in your social media life, in your professional life, जिसको देख के without any reason you feel good, you feel positive? Come on, tell me. Is there anyone? No one? Can you not think of anyone like that? I have so many people like that. Some are public figures. Some are public figures looking at whom I feel very nice. I cannot explain in words like what is the feeling, but I feel positive. I feel nice. I feel good. Okay, so this is this happens because of the personality. Because I do not know about the person. I do not know him or her personally, right? But we like that person. So every individual has his own characteristics, has his own way of behaving, responding to emotions, okay, perceiving things and looking at the world, right? Whether uh, a glass is half filled with water or half empty. Rekha Singla, ma'am, I feel good to see you. I'm so humble. Thank you for this compliment. ये क्या रेखा जी है या उनकी डॉटर है? कौन है यहाँ पे? Thank you so much. Shekhar Kumar, welcome to the program. Welcome to the session. Varun Chawla, welcome to the session. So, whether the glass is half filled with water or half empty, or the glass is half filled with water and half with an opportunity to be filled with any liquid or anything of our liking, is a way of seeing things. Is a way of seeing things. Some people like the rain, some people doesn't like the rain. Why? Because the way they perceive it, isn't it? So every individual has these characteristics, how they would behave. ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है. Okay, Mehak, right? How are you? So ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है. ये हम लोग खुद से हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट्स को देख के सीख जाते हैं. We learn about it. We adapt to it. So whether you will be happy to see someone doing very well in their life or you will feel jealous depends upon your perception, depends upon your mindset, depends upon how you see things. Am I clear to all of you? क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ? इसे को कहते हैं पर्सनालिटी. मेरी किसी चीज को देखने का जो तरीका है, किसी चीज को समझने का जो तरीका है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी. Right? Varun Chawla, yes ma'am. Elisa Singh, yes ma'am. Shekhar Kumar is yes ma'am. Manu Verma, hello Manu Verma. Monu Verma, Monu, okay, it's MONU. मोनू वर्मा ने कल मुझे बहुत हेल्प किया था
क्लास में. थैंक यू फॉर दैट. राइट. सो किसी चीज को देखने का, किसी चीज को देखने की नजरिए को हम लोग पर्सपेक्टिव कहते हैं. और उस पर्सपेक्टिव पे बहुत कुछ बेस्ड होता है. राइट. जैसे कि मेरा इमोशन कैसे होगा. कुछ एक टेंशन, में आके मैं क्या करूं. Depends upon my perception, which is in a way is my personality. मैं डर जाऊं, मैं सहम जाऊं, मैं अग्रेसिव बन जाऊं, मैं रो दूं, या मैं कामली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करूं. देखो, हम लोग कोशिश कर सकते हैं. आगे उसका रिजल्ट क्या होगा, नॉट ऑलवेज दैट इज इन आवर हैंड. That is our emotional quotient, that is our emotional balance. राइट. कोई कोई लोग हैं, आप देखिए, आप थोड़ा सा, मैं जो बोल रही हूँ आज, उसको आप थोड़ा सा अपने चारों ओर के लोगों के साथ, अपने आप के साथ रिलेट कीजिए. यू रिलेट दैट टू people around you. Hmm? And you will see that what exactly I'm trying to say. You will understand what exactly I am trying to say. Right. So in that case, how you react to a situation is my personality. Right. uh, Maybe some of us here in this group, we like to go out to a party on a Saturday night, meeting friends, enjoying loud music. Fair enough. Or maybe there is someone who'd like to be at home, enjoying a quiet meal, watching a little bit of TV, reading a book, sleeping. Oh my God, if you give me to sleep, I don't want anything else because I hardly get the time. So it again depends on the taste of the person, liking of the person. Dr. Rachna Sharma, hello, Dr. Sharma, nice to see you. Uh, so it depends on the liking of the person. Also, that is also a part of our personality. क्या मुझे किसी ने सिखाया है कि ये सही है या यह गलत है? There is nothing सही and गलत in personality. There is nothing सही and गलत, right? DGP असफ, हेलो. आपका नाम अगर आप थोड़ा सा पूरा लिखे तो अच्छा होगा, लेकिन वेलकम टू दिस सेशन. तो ये डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट के ऊपर. अनीता, अगेन अनदर अनीता, हेलो अनीता. ये डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट के ऊपर. और हमारा पर्सनालिटी किस पे डिपेंड करता है? वो भी डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट के ऊपर. Now, what does our mindset depend upon? Our mindset depends upon a lot of things. The first and the foremost thing is our micro environment, that is our family, parents, grandparents, brothers, sisters, siblings. संतोष बंसल, आपने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैम प्लीज आप स्पोकन इंग्लिश आप. ओके डलीप, ग्रेट टू सी यू माय डियर. संतोष, आप थोड़ा फिर से लिखिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं. फिर से लिखिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं. राइट. Am I clear, Santosh? Do you mean to say? Do you want me to make a spoken English app? हाँ, मुझे वही लगा. I wish I could make that. It would be so helpful. It would be so helpful for all of us. लेकिन ना मुझे उतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है. कंटेंट तो मैं दे दूंगी, आप लोग एक बार देखो टेक्निकल चीज कैसे बनाते हैं. आई हैव नो आइडिया. सो आई एम अ टीचर एंड आई ट्राई टू बी अ टीचर थ्रू आउट माई लाइफ. डोंट वरी.
Santosh, I really appreciate your proposal. एंड मे बी आई विल ट्राई सम डे, यू नो, मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा वो टेक्निकल चीज, लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी, आप जैसे लोगों से। तो समझे, ईश्वर ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी होगा, जो डोंट वरी। तो लेट मी कम बैक टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। So what is a personality? A personality is a combination of of our attitude, our behavior, our habit, our our knowledge, our academics, our extracurricular activities, everything, सारा कुछ मिला के एक पर्सनालिटी होता है। और हेलो ममता, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है पता है? वो है हमारा एटीट्यूड, वो है हमारा एटीट्यूड, राइट। अगर मैं चीजों को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करूं तो मेरा पर्सनालिटी सही है। लेकिन क्या हर सिचुएशन में वी आर एबल टू सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट? नो, आई डोंट थिंक सो। वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, राइट? सो इन सम केसेस वी सी थिंग्स इन अ नेगेटिव लाइट ऑल्सो, मेरे से कुछ नहीं होगा। बट ये मेरे से कुछ नहीं होगा के बाद, जब एक दिन के बाद मैं फिर से आई यू नो wrap up everything and I again pull up myself and I say ki, okay, let one more try. That is the attitude, that is the attitude which is very important in personality. So I was talking about environment, right? हमारे चारों ओर का जो environment है, जो वातावरण है, सबसे पहले वो शुरू होता है, सबसे पहले वो शुरू होता है कहाँ से? सबसे पहले वो शुरू होता है हमारे फैमिली से। मनीष कुमार, हेलो, वेलकम, वेलकम टू द सेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली। Family comes first. Let me tell you this. You know, till the end of your life, till the last day of my life, I'm going to say this: that whatever comes first, before everything comes family. So the first thing, the first environment we're exposed to is our family, our society, then school. कोई भी स्कूल, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल्स का वातावरण, स्कूल का प्रेयर जो हम लोग खड़े होकर मॉर्निंग में करते थे ना, उसका एक इम्पैक्ट हमारे लाइफ में रहता है। जितने भी हम बड़े हो जाए उसके बाद भी, राइट। हमारा फिनेंशियल कंडीशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है हमारे पर्सनालिटी के ऊपर। कैसे, वो मैं बाद में आऊंगी। Genetic factors, there's something called genetic factors, genes, right? Which we get from our parents, from our grandparents, again from the family tree. Situations and circumstances also contribute to an individual's personality, है ना? जब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। Let me give you an example. When the pandemic first started, April 2020, how did you all react to it? Tell me. How did you all react to it? कैसा लगा था एक दिन जब हमारे प्रधानमंत्री आए टीवी पे आके बोले कि कल से सारा कुछ बंद? How did you feel? What was your first reaction? Tell me. What was your first reaction? Tell me. जब उस दिन शाम को 7 बजे या 8 बजे, मुझे उतना याद नहीं है, टीवी पे पीएम आए थे और उन्होंने बताया था कि कल से सारा कुछ बंद, 15 डेज के लिए था शायद फर्स्ट टाइम। What was your first reaction to it? Very shocked. Okay. Okay. Absolutely. There are some people who are very shocked.
और बताइए, संतोष बताइए, ममता बताइए, मनीष बताइए, अनीता बताइए, क्या था, क्या था रिएक्शन? मैं अपनी रिएक्शन आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए मेरा क्वेश्चन क्या है। मुझे लगा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस वॉज बीइंग डन, बिकॉज आई थॉट दैट ओके, अगर 15 डेज या 20 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो शायद 20 मैम आपको जानता हूँ, मतलब ओके, 20 डेज तक अगर सारा कुछ बंद रहेगा तो ये पूरा जो वायरस है इसका कंट्रोल होगा, और मे बी उसके बाद से हम लोग अच्छे से हम लोग वी विल बी एबल टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। उसके बाद फिर से लॉकडाउन हुआ। दैट डे आई वॉज सैड बिकॉज आई फेल्ट yes, how it was look like everything is closed, और आप लोगों के लिए तो ये सारा कुछ बहुत नया था। आप लोग बच्चे हो, यू आर जस्ट स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स, राइट? मैंने थोड़ा थोड़ा कर्फ्यू देखा है बिकॉज आई वॉज इन नॉर्थ ईस्ट, सो I have seen that how curfews are like political curfews I have experienced in the northeast, but even then, right? फिर मुझे डर लगा कि अब क्या होगा, whether we will be able to survive or not, isn't it? Whether we will be able to survive or not. लेकिन अब देखो, अब क्या डर लगता है? लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, 8 बजे के बाद बाहर जाना, 8 बजे के नहीं नहीं, लॉकडाउन अभी लगा या नहीं लगा मुझे नहीं मालूम विपुल जी, मुझे नहीं मालूम, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? अभी हम लोगों को क्या लगता है, अच्छा ठीक है 8 बजे के बाद नहीं जाना है, एक हफ्ते बाद 8 का 9 बजे हो गया, एक हफ्ते बाद 9, हाँ 9 का शायद चेंज हुआ, कुछ नहीं, वी आर गेटिंग यूज टू इट, वी आर गेटिंग यूज टू इट, सो वी आर एडेप्टिंग टू दिस न्यू नॉर्मल, वी आर एडॉप्टिंग टू दिस न्यू नॉर्मल। यस, एग्जाम का क्या होगा, बहुत डर था, अभी तो लग रहा है चलो ऑनलाइन एग्जाम में तो मजे ही मजे हैं, है ना? So our personality also changes with the situation, with the change in situation. What is our personality here? It is our reaction to the situation. It is our reaction to the situation. That is our personality. Isn't it? Isn't it? Priyanka is saying very bad. Even I feel very bad. I mean, घर पे बैठ के God alone knows when we will be able to go out. But still, we are now more accustomed to this situation. We are now more accustomed to this situation. Right? Right? And how did we get accustomed to the situation? With time. With time. With experience. So our personality depends a lot on our experience. It is said that our personality is built during our childhood, and when we grow up, over the years, what happens? We keep on polishing on that. मुझे अगर बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन जब I become conscious of that fact, I take care of that. अगर मुझे गुस्सा आता भी है बहुत जल्दी तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं बताते हैं, चुपचाप से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बक 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 सारा कुछ बता देते हैं, अच्छा भी बोल देते, बुरा भी बोल देते हैं, हेलो हरपिंदर, बुरा भी बोल देते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के साथ मिलते हैं, हमें ये पता चलता है that what is the right thing to do and what is the wrong thing to do. And then what we do, we try to
We try to take care of that. है ना? We try to take care of that. That is where personality तो है. That is where development of personality comes. Right? We have certain thing. We have certain thing. लेकिन उसको डेवलप करने में कोई हर्ज नहीं है. So we have to find out. We have to find out what are our strengths, what are our weaknesses, how we can develop our strengths, how we can take care of our weaknesses, right? And how our behavior will create a situation where we will win and the other person will also win. Am I being clear to you all? क्या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में? आप मुझे बताइए प्लीज टेल मी. हो ही सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आप लोगों को. अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे. टेल मी वन थिंग. हाउ डू यू डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी? हाउ डू यू? राधे राधे मैम, राधे राधे भाई. कौन हो आप? राजेंद्र कुमार, नमस्ते. हाउ डू यू डिस्क्राइब your personality? Are you an introvert person? Are you an extrovert person? Are you a quiet person? Are you a happy person? Are you always tensed? Do you feel very weak, mentally weak, or you are a mentally very strong person? Mentally very strong person. How do you describe yourself? Come on, tell me. Like, if you ask me, I am an absolutely optimistic person. मैं बहुत पॉजिटिव हूँ. मुझे हर प्रॉब्लम में लगता है कि ओके चलो ये निकल जाएगा, कुछ अच्छा आएगा. I always feel that. Not always अच्छा आता है, लेकिन if I do not think in that way, I cannot survive. That's my way of life. I always think कि चलो कुछ अच्छा तो आएगा. Yes, ये हो रहा है, ये भी क्या कुछ कम है? तो आप लोग मत बताइए. और मुझे टेंशन होती है. Of course, I also feel very tense, but I cannot express it. I never express my tension because I think if I express my tension, people around me will also feel tensed. Mentally strong and quiet. Very good. This is a very good characteristics. मोनू वर्मा आपने बताया कि जो लोग quiet है, वो लोग mentally strong and quiet. The people are. It is actually. It is actually a very, very important characteristic for that person. Okay, the rest of you, if you can please come up with your ideas, like how do you describe yourself, you can tell me, right? According to a research, I'm strong and an emotional person. Okay, that's great. Meher. Okay, Monu Verma says that never express my problems to anyone. कोई फायदा नहीं होता है बहुत. I think I go with your policy, Monu. But people say that if you share problems, if you share your tension, you will be able to. Maybe they will be able to help you, and you feel much relieved. But somehow I cannot do that. I'm not very comfortable doing that, right? So that is one thing. Okay, so Mehak is saying that she's a strong and emotional person. Emotional and quiet. Gagandeep is emotional and quiet, right? नो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई पूछ रहा है तो मैं बता देती हूँ. पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम एमफिल नहीं है. पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होके ही आता है. बट आई एम एन इमोशनल गर्ल. वी ऑल आर इमोशनल. दैट्स गुड. इमोशंस आर इम्पोर्टेंट. Right? So Anita is saying she's very emotional. But are you emotionally stable? I do not share my problem with any person. Gagandeep bhi yahi bol rahe hai. Yeah, Gagandeep, I can understand your thing. Do you think you are emotionally stable? Do you think you are emotionally stable?
How many of you think you're emotionally stable? Anita, Rajinder Kumar. Okay, I'm also emotional. Fine, fine. There's no harm in being emotional. But, my question is, are you emotionally stable? Because when we say we are emotional, we somehow back of our mind mean that we are emotionally not stable. बहुत रोना आता है, इतना रोते हैं कि काम का काम नहीं होता है. क्या ऐसा है सिचुएशन? सिचुएशन क्या ऐसा है कि इतना रोए दिन भर, ना खाना खाया, ना कुछ काम किया? Okay, but never show. That's good. That means you're stable. You have that stability in you, Monu Verma. You have that stability. That is what I'm asking. It's a very, very difficult thing. Very difficult thing. But if you can adapt that, that's absolutely fantastic. Okay. Actually, many researchers they use 5 traits to describe people's personality. 5 traits. 5 फीचर्स बोल सकते हैं, 5 ट्रेट बोल सकते हैं. क्या है? एक्सट्रोवर्शन, एग्रीएबलनेस, conscientiousness, emotional stability and openness to experiences. इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं. वो क्या है? वो ये है कि किसी भी सिचुएशन पे जहाँ पे वी फेस some kind of emotional turmoil, and trust me, we face emotional turmoil every time. Before the class, when I'm thinking like how to start the class, if I become very nervous, that is an emotional turmoil. I'm not being able to handle the emotion, handle the tension, handle the pressure that I will have to take a session, or I will have to write an examination, or I will have to go and give a presentation. Isn't it? Isn't it? That is also emotional instability. I'll come to it. Before that, another word which I have used is extroversion. Extroversion. From extrovert to extroversion. How things happen. How things happen. Right? The trait describes how much you like being with other people. Do you like to be on your own? That is introversion. You like to be with others? Extroversion. You are in between somewhere? Fair enough. Depending upon the situation, we like to go out with people, we like to meet people, we like to be with them. But at the same time, depending upon the situation, we like to be introvert also. I don't want to go out with some people I don't want. It's absolutely fine. I can control my mind and emotions. Oh my God. That's very, very good, Ruchika. That's very good. That's very good. Mind, if you can control your mind. And what do you do to control your mind? Some people do meditation. Some people do meditation. Rahmat Punia, nice अब किसको बोल रहे हैं? ये थोड़ा explain करके लिखिएगा. ठीक है? That is one thing. Then the next thing is what? An extrovert tends to be outgoing, talkative, and sociable. Then comes something called agreeableness. What is an agreeableness? Can you give me a synonym of agreeableness? Perhaps empathy is a synonym of agreeableness, where the people who has this kind of trait describes or understands other people's situation in a friendly and empathetic manner, right?
people who are ready with an agreeable approach, who are cooperative in nature. People who are disagreeable tend to be suspicious and hostile, right? Then comes something called, then comes something called uh, conscientiousness. Conscientiousness. This trait describes how responsible and self-disciplined we are. अभी किसी ने मुझे यहाँ पे लिखा था रुचिका ने कि I can control my mind and मैम आप कब आ गए यूनिवर्सिटी में? मैं तो यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ बच्चा. I am sitting in my home in Calcutta, West Bengal. I'm sitting in Kolkata, West Bengal, and I am not there in your university. I hope to visit your university sometime, but then not at this moment. ठीक है राजेंद्र कुमार, आपको मिल गया आपका रिप्लाई? हाँ, ठीक है. So, conscientious people are those who are responsible people. Who are responsible people. Maybe I'll come someday. Maybe I'll come someday. अभी तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो. मैं जाके कहाँ किससे मिलूं? You people are also not there in the university. Whom should I go and meet there? मोनू, कहाँ से आप क्लास कर रहे हो? आप बताओ मेरे को. Right? So, they are dependable people. They're self-reliant people. जो खुद पे विश्वास रखते हैं. And if I can rely on myself, I can make people rely on me as well. Right? I can make people rely on myself. Yes, ma'am, I need. What do you need, Gagandeep? क्या चाहिए आपको? बोलो. Okay, you are from SKD University. Now, are you in at Hanumangarh at the moment? That is my question. Please come, ma'am. Okay, I'll come. हम लोग राजस्थान घूमेंगे फिर आके, ठीक है आप लोगों के साथ. सारा राजस्थान घूमेंगे. I really plan to visit Rajasthan sometime in my life. Okay. तो आप लोगों से मैं मिलूंगी एंड आप लोग मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ मुझे घूमना है. ठीक है, पहले सेशन को खत्म करते हैं. ठीक. तो if you are a self-reliant person, if you believe in yourself, you will be able to make people believe in you. Okay. On the other hand, if you are yourself not very confident about yourself, then what happens? You will not be able to give that confidence to other people. If I do not know what I am teaching, right, then I will not be able to teach you all what I am supposed to teach. That is self-reliant. आप लोग कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, कोई लॉ पढ़ रहे हो, कोई लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, a day will come when you will be in my place teaching people, many of you. Then if you are not confident enough, you will not be able to give that confidence to other people. I'm sorry, we are all now in a virtual medium, but this class would have been 200% different if we would have had the opportunity to do a physical classroom. But even then, I try. Very good, Gagandeep. I'm so happy that you and your sister, what is the name of your sister? Say my hi to her, right? But at the same time, utilizing this platform is also a personality trait.
अगर ये करके हम लोग दुखी होके बैठे रहे कि नहीं फिजिकल क्लास तो नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, अभी तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो ना आप लोग मेरे सेशन में आते, ना मैं आपका सेशन ले पाती। और यू सी इन द प्रोसेस क्या होता है, वी हैव डेवलप्ड अ रिलेशनशिप, इजंट इट? आपको नहीं लगता है? मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ व्हेन आई एम नॉट टेकिंग योर क्लास। मैं सोचती हूँ कि इन बच्चों के लिए मैं क्या लेके जाऊँ सेशन में। आई स्पीक टू माई फैमिली मेंबर्स दैट व्हाट शुड आई टेक फॉर देम, सो दैट सिमू ओके, सो दैट I can do justice to this 1 hour. I can do justice to the trust that SKT University has shown on me. That is what personality is all about. That is what relation is all about. Right? अगर ऐसा कोई है, जैसे कल हम लोगों ने फेस किया था बहुत सारा कुछ, कि कोई आ रहे हैं इधर उधर की कमेंट्स पास कर रहे हैं, मुझे तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने संभाल दिया सिचुएशन को, then that means what? I'm not conscious about the platform I am being given. फ्री का प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करूं मैं वहां जाके। I should value this platform. That is where what I was telling to you is all about conscientiousness, right? Conscientiousness. Right? When I am self-reliant, I know why I'm going to attend this session. I know why I am here to take this session. The university people know why they have given it to me. I think they do a lot of other sessions also. I keep on seeing those on the Facebook platform, right? But then there will be some people who will come in between, do a little bit of chit chat, go away. That is a problem. Then comes, while dealing with those people, comes what? Comes our emotional stability. Emotional stability. एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. When I'm talking about emotional stability, I do not mean that लोग आपको जो भी चाहे बोल के चले जाए and आप चुपचाप बैठे रहे. नहीं, that is not an emotional stability. लेकिन you do not become aggressive, rather you become very confident and you tell the person what is what. You tell the person what is what. उसको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, that much, right? मेरे को भी बहुत गुस्सा है, कल उनको भगा दिया। और देखो मोनू को अभी भी गुस्सा आ गया कल का बात सुन के। कोई बात नहीं, चलो को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया, कोई बात नहीं। सो दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, कि कल इसको गुस्सा आया था, लेकिन इसने एकदम बहुत कैटेगरिकली उनको बोला कि भाई या तो सेशन करो या फिर यहाँ से निकलो, राइट? दैट इज हाउ यू गॉट टू डील विद सिचुएशन। इमोशनल स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि कोई भी आके एक लगा के चले जाए हम लोग को और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। इफ आई एम डूइंग इट देन आई एम timid. Please remember the word timid, T-I-M-I-D. I am timid. ठीक है? Openness to experience. Are you open to experiences? I am very open to experiences. कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं सीखेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। You know, when I started taking virtual sessions, I do not know people. I was taking a session with an university in Roorkee. I didn't know them. They also did not know me, right? LinkedIn is a very important platform. From there, they got me and they called me and we started taking a session. I was not sure कि session के बाद क्या होगा. So I told myself कि क्या होगा. I will take my session with the students. The students will perhaps learn something from me. I will gain some experience. उसके आगे अगर कुछ नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है, देखेंगे. That will also be a learning experience to me, isn't it? Isn't it? When I started taking session for SKT University, I had no clue कि कौन बच्चा आएगा मेरे सेशन में, कैसा होगा. And now
And now I have all of you with me. Right? I actually wait. I was waiting for this girl today to join, Reena Chaudhary. I was waiting yesterday for Mehak to join. क्लास 10 की बच्ची है महक, वो मेरे सेशन में आ रही है. दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग. That is an experience, and this will remain with us. These experiences will remain with us forever, forever, right? And then, one day when you become of my age, you go and share your experience. पता है पैंडेमिक में हम लोग की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सेशन हुआ था. वहां पे मैम आती थी कोलकाता से, हम लोग बैठते थे हनुमानगढ़ से, यहाँ से वहां से, और और हम लोग बहुत बातें करते थे, वो भी चैट मैसेज पे. मैम बोलती जाती थी और हम लोग बात करते थे. दैट इज हाउ वी डेवलप आवर पर्सनालिटी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है. A+B² फॉर्मूला मेरे पास नहीं है. सच में किसी और ट्रेनर के पास हो या ना हो, आई डू नॉट हैव. But that is how, from everyday experience, from everyday learning, we will we learn, and we use it. So people who are open to new experiences tend to be curious, imaginative, and creative. नया कुछ. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं घूमने या काम करने, what are we doing? We are exploring a new place. A new place is not only the place. A new place is the people of the place, the culture of the place, the food of the place, the religion of the place, and everything. If we are open to it, we learn, we understand, we get to see a lot. If we are not open to it, we lack in confidence. If we are not open to it, we lack in confidence. Do you understand what I mean to say? So there are some people who has the personality of taking risk, calculative risk, right? And at the same time, there are some people who are very aggressive in nature, एकदम daredevil type. किसी भी बात से नहीं डरते. I do not know which one is right. Trust me, I do not know. Because personality traits are influenced by two things: a combination of heredity and environment. Heredity and environment. I agree with your statement, right? Heredity क्या है जो मैंने आपको बताया था. I will be like my father, like my grandmother, like my mother, right? Because I have inherited that genetic thing from them. And my environment. If I'm brought up in a family where mutual respect is always given, individual is given respect. The father respects the mother respects the uncle and aunt and all this thing, सब अपने आप से अच्छे से प्यार से डील करते हैं. I will also learn that. But इसका एक अलग वे होता है. If I see that is not happening, and I want that to happen, I will try to practice that. Right? Now, what do we mean by heredity? Heredity means we are born with certain distinct tendencies, right? Cheerfulness, shyness. Some people are musical, some people are creative, some people are very good in mathematics, numbers. That is heredity. We are born with that. And then comes the environment. Environment is हमारे चारों ओर का environment, right? So there are some people who are very rough. Maybe the weather condition of that area is also very rough. Everything has an impact on our personality. Friends, family, culture, all this has gotten impact on our personality, right? When our personality is developed in our childhood, the greatest influence, you like music, that's very good.
The greatest influence of whom do we have in our life? Oh, you also like singing. Very good, very good. किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है हमारे लाइफ में, बताइए. सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? हमारे मम्मियों का. Our mothers, because the person to whom we are physically and emotionally attached the most is our mother. That's parents ka, but more I think of the mother, right? Then the father, of course, and then our siblings. अगर हमारा कोई भाई बहन हो ना, तो yes, everyone is important. Both the parents are important, but since we are physically more close to our mothers, each one of us, we are physically more close to our mothers. We get more out of her than anyone else. Hereditary, maybe I'm like my father. उनके जैसा बैठना, उनके जैसे बातें करना, उनके जैसा सब कुछ. लेकिन deep inside, the influence of the mother is very much, right? And how do we develop our personality now that we are grown up, right? The first and the foremost thing in developing one's personality is self belief. खुद पे यकीन करना. आप लोगों को क्या कभी लगता है कि आप लोग खुद पे उतना यकीन नहीं कर पा रहे हो? लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? Yes, we all are the mirror image of our mother. Absolutely, Himanshi, absolutely. देवीलाल वर्मा, देवीलाल कैसे हो? मुझे कभी कभी लगता है, सबको लगता है, लेकिन कभी कभी इज ओके. एट टाइम्स वी ऑल फील डाउन, एट टाइम्स वी ऑल फील demotivated, but how long that demotivation continues, that is the thing. एक दिन हफ्ते में, एक दिन महीने में, एक दिन 2 महीने में, sometimes based on the, और वो किस पे डिपेंड करता है? on the situation. एग्जाम आ गया है, पढ़ाई नहीं हुआ है, you feel so demotivated, isn't it? Isn't it? Happy Raksha Bandhan to all of you. Raksha Bandhan kal hai na? Right? So we have to develop that self-reliance, self-belief that yes, I can do something. Maybe I cannot do what Devilal can do. Maybe I cannot do what Monu can do. But I can do what I can do. I can teach English. Gagandeep can teach physics, right? Monu can sing a song. Each activity is important in its own way. Each activity is important in its own way. That is where we develop our self-belief and self-confidence. कि मैं जो काम कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता ही है. हाँ, सबका होता है, बड़े बड़े लोगों का होता है. यू आस्क दिस यूएस प्राइम मिनिस्टर बिडेन, उनका भी हो रहा है. अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल सिनेरियो में, उनका भी कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होगा कभी ना कभी, राइट? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. और अगर उन लोगों का होगा तो हम लोगों का तो होगा ही. हम लोग तो मतलब कुछ है ही नहीं उनके सामने. Learn to be independent. Learn to be independent. Independent का मतलब क्या है? मैं बाइक लेके निकल जाऊं घर पे नहीं बोल के? No, that is not independence. Mental independence. Mental independence. Learn to think with different options in your head. Learn to think with different options in your head. That is very important. एक problem, you know, this is a session where I am not being able to interact with you much. हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग लिख रहे हैं. That is a very positive attitude. I really
appreciate that. हिमांशी ने क्या लिखा? Right, ma'am. Every person has a different quality. We need to find it and work to improve it. Absolutely, absolutely. Right? तो एक प्रॉब्लम मान लो और उसके 4 solutions निकालो. Management science says that don't come to me with problems, come to me with a solution. Nobody likes a person, किसी को वो आदमी अच्छा नहीं लगता जो प्रॉब्लम लेके आते हो. प्रॉब्लम तो होगा ही, उसके साथ सोल्यूशन भी जो लेके आते हैं उसको ही सब अप्रिशिएट करते हैं. We have the right to follow our dreams, of course. I like cricket, bike riding, music, walking. Oh, mujhe bike riding, I do not know how to ride a bike. But I feel those who know, they are so independent, na? Right. I like writing, diary, and singing. Very good, very good. Right? देवीलाल, ये क्या लिखा आपने? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. So, self-reliance, independence, take initiative. छोटा छोटा इनिशिएटिव घर पे लीजिए, घर पे छोटा छोटा इनिशिएटिव लीजिए. For initiative you don't have to do move a huge wall. You take a small initiative कि घर पे आज से हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे. छोटा सा इनिशिएटिव. सिर्फ आपके घर में अगर 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, उन चारों को समझाइए कि प्लास्टिक से कितना हानि हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का. Right? Develop skills. You are developing a skill while attending this session. Do more. There are so many skills which are developed, which can be developed, and search for an identity. I will continue with this in my next session also, along with something else, because today I have no more time left. So I will continue with this. But then let me tell you another thing. Establish intimacy with the things that you like doing. मान लो आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है. You do gardening. You please do gardening. Create and nurture. गार्डनिंग आप करोगे तो कुछ क्रिएट करोगे उस शौक को. अच्छा, जिसको गार्डनिंग नहीं आता वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. Of course, somebody can sing, somebody can dance, somebody can write, right? And look back with acceptance. Look back with acceptance. जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट मत करो. Failure, learn to accept failures also, because from failures we also learn a lot of things. So आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ. नेक्स्ट डे इसको थोड़ा सा और मैं आप लोगों को समझाऊंगी. सबको राखी की बहुत 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 सारा प्यार और बधाई. आप कल राखी बहुत अच्छे से मनाइए अपने भाई बहन परिवार के साथ. Wishing you all a very happy Rakhi. I will see you on next week. Till then, bye-bye, take care and enjoy life. Thank you so much, Monu, for your wishes. Thank you, all of you. Bye, take care.